एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के ट्यूटोरियल में हम ये बैग बनाना सीखेंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल है इस बैग का और बहुत ही इजीली बन के रेडी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। एंड नाउ आई बी चेनिंग 120 चेन्स फॉर द फाउंडेशन चेन। सो मैं 120 चेन्स बनाऊंगी। सो 120 चेन्स बना के फिर हम आगे की रोज स्टार्ट करेंगे। So I'll finish making 120 chains and then I'll meet you back here. So I have completed making 120 chains. मैंने 120 chains बना ली हैं. And let me show you, if you want to increase or decrease the size of your bag, you have to increase or decrease the size of your foundation chain. तो आपको जितना बड़ा बैग चाहिए उतनी बड़ी आपकी foundation chain होगी, because so this length is like, imagine this is your front side and this is your back side of the bag. So if I want my bag to be this big, so this is the measurement for that, and this is the strap, the bigger strap. One, you have to make the strap a little bigger than the other. So when you like fold this will be your strap and this will be your bag. So you can have a look at the size and you can make out whether you want a bigger size or a smaller size. So it depends on your foundation chain. So this one piece will be folded and made into a bag after it is completed. तो आपको इस तरीके से रख के आप देख सकते हो कि आपको अगर और बड़ा चाहिए अपना बैग या अपना स्ट्रैप और बड़ा चाहिए तो आप अपनी फाउंडेशन चेन इंक्रीज कर सकते हो. सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर फाउंडेशन चेन दैट हाउ बिग और स्मॉल यू वांट योर बैग टू बी. आई होप it's making sense. See, if I make this strap a little bigger and bag a little smaller, so this is how it will be the size, because one strap will be bigger and the other will be smaller, which the bigger strap will go in the smaller strap. So this is how I've made 120 chains. You can increase or decrease according to the size of your bag, whatever you feel like, whatever you like. So now let's begin with our row number 1. So at the beginning we'll chain one extra chain for the height of the stitch. तो एक extra chain कर लेंगे. We'll go into the second chain from the hook, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So we have done a single crochet stitch in the second chain from the hook. हमने single crochet stitch करा है. One single crochet stitch into the next stitch, 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 and this is the pattern for this row. You have to keep doing one single crochet stitch in each of these following stitches. आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है unless you reach the end of your foundation chain. जब तक आप एंड पे नहीं पहुंचते अपनी फाउंडेशन चेन के, आपने इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. So I'll complete this row and then I'll show you what to do for the next row. मैंने first row complete कर लिया. I've completed first row by doing one single crochet stitch in each of the following chains. Now let's begin with the row number 2, and row number 2 to row number 7 will be the same pattern. row number 2 से row number 7 का same pattern है, तो आप इसे ही follow करेंगे. So chain 1, turn your work, chain 1 करके अपना work turn कीजिए. One single crochet stitch into the first stitch, one single crochet stitch into the next stitch, one single crochet stitch into the next stitch, one single crochet stitch into the next stitch, and so on. So आपने इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है और इसको आपने रो 7 तक रिपीट करना है. सो रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 एंड रो 7. तो आपके पास यही सेम पैटर्न है जो आपने रिपीट करना है. सो यू हैव टू रिपीट इट अंटिल यू रीच योर रो 7. You have to just chain 1, turn your work and keep doing one single crochet stitch in each of these following stitches until you reach the end. Then again you have to chain 1, turn your work and do the same. तो आपको हमेशा जब आपका रो ख़त्म होगा तो chain 1 करके टर्न करना है और फिर हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. So I'll complete my row 7
and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये row 7 तक complete करके फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या करना है. I've completed 7 rows of single crochet stitches. मैंने 7 rows complete कर लिए हैं. So now we'll begin with our row number 8. Chain 1, turn your work, 1 single crochet stitch into the first stitch, 1 single crochet stitch into the next stitch, 1 single crochet stitch into the next, and so on until 35 stitches are left. तो आपने इस रो में तब तक सिंगल क्रोशे स्टिचेस करनी है जब तक लास्ट की 35 स्टिचेस ना बची हो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई लीव इट एज इट इज एंड आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर 35 stitches. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5. So here this is the 35th stitch. So I'll put a stitch marker on the 35th stitch, and now we don't have to work these stitches. तो ये वाली stitches हमको work नहीं करनी. We'll only work till the stitch marker. तो जहाँ तक हमारा stitch marker है हम सिर्फ वहीं तक work करेंगे. So we'll keep doing one single crochet stitch into each of these following stitches until we reach our stitch marker. तो जब तक हम stitch marker तक पहुँचते हैं हमने सिर्फ वहीं तक single crochet stitches करनी है. And from there on we have to only work in these stitches. We don't have to work in those 35 stitches anymore. तो हमें अब वो 35 stitches में work नहीं करना, हमने सिर्फ ये बाकी की stitches में ही work करना है. So once I reach the stitch marker, I'll show you how you have to continue doing the other rounds, because other rows, because it will be the same as we do the next row, and you have to repeat the row a couple of times until you reach the size of the bag. So I'll complete this until the stitch marker and then I'll show you what to do next. तो मैं एक stitch marker तक complete करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने next row और आगे की काफ़ी सारी rows इसी तरीके से complete करनी है. So देखिए मैं यहाँ पे stitch marker तक पहुँच चुकी हूँ. I've reached the stitch marker, so I'm not going to work in the stitch where I have added the stitch marker. तो यहाँ पे जिस स्टिच में हमने स्टिच मार्कर ऐड किया वो वाला स्टिच हम वर्क नहीं करेंगे. नीदर ऑफ द स्टिचेस वी आर गोइंग टू वर्क. सो दिस विल बी एज इट इज बिकॉज दिस विल बी द हैंडल, वन ऑफ द हैंडल्स, बिकॉज वी आर मेकिंग अ टॉप डाउन बैग. So this is the handle which will be connected to the other side afterwards. So now this row that we are going to do, we have to repeat this a couple of times so that we get a nice width of the bag. So this is how you have to do. Chain one करके turn your work, just turn your work, and as you did earlier you have to just keep repeating one single crochet stitch in each of the following stitches. तो जैसे हमने पहले किया था, one single crochet stitch हर एक stitch में करते जाना है. So one single crochet stitch in the first stitch, one in the next, one in the next, one in the next, and so on until you reach the end. Then again you have to chain one, turn your work, and work one single crochet stitches in each of the following stitches until you reach this point. We don't have to work here. Now we'll only work till here. तो यहीं तक हमने वर्क करना है और इसकी width को हमने increase करनी है. So we have to increase the width of the bag because we are making a top down bag. So now we have to increase the width of the bag. So you can make it as big and as small according to your liking. तो जिससे आपको जितना इसकी width को बड़ा करना है उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं. जितना छोटा रखना है, जितना बड़ा रखना है, टोटली आपके ऊपर है. मेरे हिसाब से मैं अराउंड 20 to 25 रोज़ के बीच में करके चेक करूँगी कि मुझे कैसा लग रहा है और फिर उसके हिसाब से मैं आगे की रोज़ बनाऊँगी. So I'll do like around 20 to 25 rows and then I'll check if it is fine or not, and then I'll continue with the other rows. I'm sorry. So let's keep doing
keep repeating this row for a couple of times, and I'll meet you back here after I complete the width of the bag, and then I'll tell you how many rows I did. And then we have to make the strap, other strap, and a couple of rows, and then the stitching of the bag, and the bag will be ready. So it's very easy. I hope you're liking it. तो चलिए मैं थोड़ी सी रोज़ कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ की हैं विड्थ के लिए, बैक की विड्थ के लिए. So I'll meet you back here once I complete a couple of rows for the width of the bag, and then I'll show you what to do next. So here you can see I have done many rows. So I have done approximately 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. So approximately 28 rows I have completed after we had made the strap part. तो मैंने 28 rows complete कर लिया, and I changed the color here because I ran out of the green color yarn and then I had to attach the white color because I had to complete the tutorial. तो मेरा ये green color ख़त्म हो गया था, तो मैंने white add कर लिया बिकॉज मुझे ट्यूटोरियल कंप्लीट करना था. आप चाहे तो एक सिंगल कलर से बना सकते हैं, आप चाहे तो डबल कलर भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स योर विश. इफ़ यू वांट टू रियली चेंज द कलर यू कैन इवन यूज़ मैनी कलर्स इन मेकिंग द बैग, और यू कैन इवन मेक इट विद अ सिंगल कलर. सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग 26 रोज फ्रॉम हियर, यहाँ से 26 रोज कंप्लीट कर लिया मैंने. वंस यू रीच द साइड फ्रॉम वेयर यू हैव मेड द फर्स्ट, वेयर देयर इज़ द फर्स्ट स्ट्रैप, जहाँ से ये पहला स्ट्रैप है उस वाली साइड पे पहुँचना है आपको. एंड वंस यू रीच द साइड, नाउ वील बी चेनिंग for the second strap. So first I had thought to make this strap the larger one, but as I noticed that it is small enough, so I'm leaving it to be the smaller strap and I'll be chaining extra here to make a bigger strap. तो ये वाला strap जो है मैं इसको छोटा वाला strap की तरह यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं ज़्यादा chains बना लूँगी ताकि ये बड़ा strap बन जाएगा. So here this strap is of 35 chains. So I'll be chaining around 50 to 55 here according to the size. So let's begin chaining here 50 or 55. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I have chained 55. मैंने 55 chains बना ली हैं. You can make the chains and you can fold it in half and you can see whether the size of the strap is good enough or not, and then you can increase or decrease the number of chains according to your choice. तो आप अपने हिसाब से इसको फोल्ड करके देख सकते हैं कि ये साइज़ आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से आप अपनी चेन्स बना सकते हैं. So once you've completed making the chains for the strap, we'll start working from the second chain. So I'll just turn my work. And from the second chain from the hook, we'll start working single crochet stitches. So go into the second chain, work a single crochet stitch, go into the next chain, work a single crochet stitch. So we have to just keep doing single crochet stitches in each of these following chains until we reach the back part. And then from here, again, we'll keep doing single crochet stitches until we reach the end. Then we'll chain one and work again single crochet stitches onto all the stitches here till the end. So this is what we have to do. So basically we have to complete 7 more rows because we have this portion of 7 rows, so we have to make the same size at the other end as well. तो हमें जैसे हमारा पहला जो स्ट्रैप हमने बनाया था 7 रोज़ टोटल में थी, तो उसी हिसाब से हमें जो सेकंड वाला है इसको भी 7 रोज़ के ही साइज़ का बनाना है. अगर हम एक कम ज़्यादा करेंगे तो उसका साइज़ में डिफरेंट हो जाएगा, दोनों का साइज़ डिफरेंट हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा. सो जस्ट कीप डूइंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस. इसी तरीके से बस सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाएंगे. So here you can see I have almost reached the end of the chains that we had chained, the extra ones. तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा चेन्स बनाई थी ऑलमोस्ट इसके एंड पे मैं आ गई हूँ. एंड हियर आई एम गोइंग टू वर्क सिंगल क्रोशे इन द लास्ट
chain that I had worked, and now I'll be working in the stitches here. So just go in the stitch and make single crochet stitches. तो इसी तरीके से हम stitches के अंदर single crochet stitches करते जाएंगे. ये देखिए, तो एंड तक, यहाँ तक हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस की रो कंप्लीट करेंगे जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे. सो एज यू वर डूइंग योर प्रीवियस रोज, यू हैव टू जस्ट गो इन एंड कीप वर्किंग single crochet stitches in each of these following stitches. So as you can see, I have made the strap as wide as the first strap. ये देखिए, ये सेम width का हो गया मेरा दूसरा strap भी, which I was working on. So once you reach the same size of the other strap, just chain one and fasten off. तो chain one करके हम इसे fasten off कर देंगे. And now you can use the yarn itself to attach both the sides of the bag, or you can use a tapestry needle and thread. It's totally up to you the way you want to join the bag. तो जैसे आपको अच्छा लगे, चाहे आप इसी थ्रेड से, इसी यार्न से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेपेस्ट्री नीडल की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसे ज्वाइन करी हूँ, आई एम सॉरी, नीडल एंड थ्रेड की मदद से. तो मैं इससे कट कर दूँगी यहाँ से एंड इसको वीव इन कर दूँगी. सो आई जस्ट वीव इन so that it's secure enough and doesn't come out, and I'm going to use a needle and thread to sew my bag. तो मैं needle and thread से इसे stitch कर दूँगी. आप चाहे तो yarn की मदद से, slip stitch की मदद से, जैसे आपको easy लगे आप उस तरीके से इसे join कर सकते हैं. So whichever method is easier for you, you can use the method to sew the bag. So I'll cut the extra part from here. That's it. So now you have to fold the bag in half. So this is one side, ये एक side है, and this is the other side where we have both the straps. So you have to fold the bag till here, and then fold the strap in half, and then you can start sewing from here. So you can start from here and then you can go till here, and then you have to join these two parts. Or first, if you want, you can join from here, from bottom till up here until the strap is starting, and then you can just fold the strap and join it to this part of the bag. I hope I'm making sense. ये देखिए आपने क्या करना है, आपने इस बैग को यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है. So if you start sewing the bag from here and you reach till here where the strap is starting, so from here you can just cut the thread and then fold the strap in half and join this part of the strap to the bag. So here you will have one side ready, and similarly you have to do that for the other side as well. Just from here, start sewing from here till the strap is starting, then fold the strap in half and join the strap to one part of the bag, the other side. So here, like this. So I'll show you what I'm going to do now. So it's better you stitch it on the wrong side so that you'll have a cleaner finish on the outer side. So what I'm going to do is, first I'll stitch one side. I'll start sewing from here. So make sure that you've folded it in exact half like this, okay? And then we'll start sewing from here. So I'm just going in and I'm using needle and thread. You can use any method that you're comfortable with, okay?
and I'm just going to take both the stitches and just normally attach both the sides. And you can make the bag according to your choice, how big, how small you want your bag to be. It's totally up to you. आपको जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए आप उतना उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, सिर्फ फाउंडेशन चेन को आप बड़ा छोटा करके अपने बैग का साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. So I'll complete sewing from here till here and then meet you back when I reach here. So I've completed sewing from one end till the strap is starting. So this part is sewn. Now I'm just going to make a couple of knots so that it's secured enough and doesn't open. तो मैंने यहाँ तक इसे स्टिच कर लिया है. अब मैं बस 2-3 नॉट्स बांध लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए और ये खुली नहीं. एंड देन हम इस साइड के स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे. So once you have done sewing one side, we'll attach the strap and then we can start sewing the other end in the similar manner. तो यहाँ मैं इसे कट कर रही हूँ यहाँ थ्रेड को एंड फिर से अब हम ये देखिए ये वाला साइड हमारा सिल गया है. We have attached that side. Now we'll fold the strap into half and we'll attach the strap to this side. So we'll go in like this and we'll attach the strap to the other side of the bag. Okay. So we'll just go in here, go into the side of the bag and then go in the strap like this and just attach it normally. You can use any method as I said previously. कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो इसको सिलने के लिए. बेशक आप स्लिप स्टिचेस की मदद से भी इसे जॉइन कर सकते हो या जैसे मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ आप वही सेम ऊन भी यूज़ कर सकते हो जिस ऊन से आपने ये बैग बनाया अपना. So you can use any method, but I'm preferably doing it this way. So once this side is ready, I'll be doing the exact same for the other side. तो एक बार ये वाला साइड मेरा हो जाएगा तो मैं सेम तरीके से दूसरी साइड को भी स्टिच कर लूँगी और हमारा बैग हो जाएगा रेडी. एंड दैट्स इट, आवर बैग विल बी रेडी. ये देखिए तो इधर भी मैं थोड़े से नॉट्स बना दूँगी ताकि यहाँ से भी सिक्योर हो जाए. So I'll just make a couple of knots here as well so that it's secure enough and doesn't come out. Because bag needs to be sturdy. बैग को तो स्टर्डी रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कि हम उसमें थोड़ी सी चीज़ें रखें और हमारा स्ट्रैप निकल जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मेक श्योर करेंगे कि हम इसे अच्छे से सिक्योर कर दें. So we'll make sure that it's secure enough and doesn't open.
that's it. So I'll just go in couple of stitches and then cut the extra thread. तो यहाँ से मैं extra जो भी thread ऐसे cut कर दूँगी. And as you can see, one side is done. See, this is the strap and this side is totally sewn. Now we have to do the exact same for the other side. इसी side दूसरी side के लिए भी same हमने करना है. So we'll start from here. We'll join these two portions, and once we reach here, then we'll cut the thread. We'll fold our handle into half and join the strap to the other part of the bag. So I'll complete this and then I'll show you how the bag looks. So here I finished the sewing part. ये देखिए मैंने सिलने का काम पूरा कर लिया है. ये देखिए दोनों साइड्स भी स्टिच कर दी हैं एंड जो स्ट्रैप था उसको दूसरे साइड से भी स्टिच कर दिया है. एंड नाउ द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फ्लिप द बैग बिकॉज दिस विल बी इन द इनसाइड. तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी. बेटर होता है कि अगर हम रॉन्ग साइड पे स्टिचिंग करें ताकि हमारा जो फ्रंट साइड है वो एकदम क्लीन और क्लियर दिखे. इसका कोई राइट साइड रॉन्ग साइड नहीं होता बिकॉज सिंगल क्रोशे स्टिचेस हम कर रहे हैं तो इसमें कोई राइट रॉन्ग साइड नहीं है. बट जिस साइड पे हमने स्टिचिंग किए है बेसिकली वो वाली साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरी साइड को हम फ्लिप कर लेंगे ताकि हमारे बैग को एक नीट लुक मिले. तो इसको ये हो गया है. ओके तो इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे. एंड द बैग इज़ रेडी. बैग रेडी हो गया है. जो इसका वे है होल्ड करने का, वी हैव टू जस्ट पुट द बिगर स्ट्रैप इन द स्मॉलर वन एंड हियर आवर बैग इज़ रेडी. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting. Be happy. Be safe. Bye bye.